foremost, I think what I would like to see registered is the overall work done under the Honorable Prime Minister's stewardship between May 2014 and today. We are on the end of August 2023. You know, when my predecessor was the headmaster, if I may use that term, of this ministry, the ministry had actually, it was 3 separate ministries, it got combined to 2. Can I request you to please put off your phones? Whoever it is, please put off your phone. It was combined from 3 to 2. Just before I came, there were in fact 2 secretaries in the ministry. And then it became 1 ministry, Housing and Urban Affairs. But the schemes that we are reviewing today are all schemes which actually commenced after the Honorable Prime Minister assumed responsibility. He joined in May 2014. I think it took about good 8-9 months to conceptualize the schemes, and most of these schemes have actually a starting point of June 2015. But we take May 2014. And what we've done is to compare what happened in the previous 10 years and what happened in the subsequent 9 years. When you compare, I mean, comparisons have to be for the same product or the same kind of a project. If you look at the overall urban spend, it used to be, I think, for all the schemes put together in the years between 2004 and 14, it was about 1,57,000 crores. And I think I'm going to unveil an e-book. Have they got copies? Let me release it and give it, because I don't think we should be wasting time. It's also available in hard copy for those of you who want to see it today. And I'll just give you 1 or 2 statistics from here. The Honorable Prime Minister said, we see urbanization as an opportunity and we are committed to making our cities world-class urban spaces for further ease of living. In the 10 years, I just gave you the figure. The figure we have used here is 1,78,000 crores, 2004 and 14. In our 9 years, this has gone up to 18,07,101 crores, 10 times increase. Now what happened essentially is that previous governments did not take urbanization seriously. I've used some harsh words in the past. I said there was neglect. I've even said there was criminal neglect of the urban space. And the Honorable Prime Minister then decided to convert this into an opportunity. And the rest is history. How many toilets have we built in the urban space? Swachh Bharat Mission, what was the percentage of waste that was processed in 2014? We have gone from 100% door-to-door collection of municipal waste. We've now got 88.70% wards have 100% segregation, and we've got 7-star rated cities, 5-star rated cities, 3-star rated cities, 1 star. I will fast forward that. I'll just give you one example. Swachh Bharat Mission 1.0 and Amrut Mission 1.0. All those targets are either at a very advanced stage of implementation or they've been merged in. And the total outlay for SBM 2.0 and Amrut 2.0 is a whopping 4,71,000 crores. That is the change that you see here. Pradhan Mantri Awas Yojana, जो 4 verticals हैं, they are covered here. Women's empowerment. देखिए, शौचालय बनाए तो who are the beneficiaries? The girl child, the dignity of our sisters, mothers. प्रधानमंत्री आवास योजना का मालिकाना हक किसके नाम पे है? तो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, पास्ट हाउसिंग स्कीम के साथ कंपैरिजन है. मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं. 2004 और 14 में जो पिछली सरकार की हाउसिंग स्कीम थी JNNURM, उसमें टोटल हाउसेज अप्रूव वर 13 lakhs. ये चढ़ता अभी 1,18 लाख पर पहुंच गया है. यहाँ 13 लाख और 1,18 लाख. हाउसेज कंप्लीटेड पहले थे 8 लाख,
अभी हाउसेज कंप्लीटेड हैंडेड ओवर टू बेनिफिशियरीज 76 लाख। हाउस होल्ड अंडर सब्सिडी स्कीम पहले 18,000 थे, अब 25 लाख है। सो आई एम गोइंग टू, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी चाहा कि वी शुड यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। एक पूरे साल को ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज डिक्लेयर किया प्रधानमंत्री जी ने। वहाँ पे हमने 53 टेक्नोलॉजीज जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज है उनको शॉर्टलिस्ट किया और उसके बेसिस पर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू दिस डिटेल्स, ये आपको कॉपी दी जाएगी, आप उसको देखिएगा, प्लीज अब्सॉर्ब इट, एंड दिस इज कॉन्स्टेंटली अपडेटेड ऑन आवर वेबसाइट। The other developments I thought we should briefly cover, Delhi Metro. I was very happy to see that the ridership, जो मैं पहले I was very fond of saying कि 65 लाख तक पहुंच गया on one day. Today we are touching a figure of 70 lakhs. I don't know what the figure for yesterday was, it will be even higher, but now we are doing 68-69 lakhs in the last few days. अभी जो हमारे कैपिटल के आसपास projects in Gurugram, some in UP, they were stalled for a variety of reasons. Overall, the housing sector is very buoyant, its growth is very impressive in our city. But कुछ projects stalled थे, तो हमने ये निर्णय लिया कि अमिताभ कांत जी को हम request करेंगे to look into this along with other professionals. They produced a report. I have written to the chief ministers on the implementation. I will request secretary to brief you on the salient features of that report. So माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई which is a highly successful scheme. उसमें this is the scheme of micro finance inclusion, if I would call it that. पहले किसी street vendor को 10,000 रुपए का लोन, अगर वो लौटा दे समय पर तो अगला लोन 20,000 का, और तीसरा लोन लौटा दे तो वो लौटा दे तो 50,000 का. So from borrowing money at high rates of interest to becoming micro entrepreneurs. And I think Secretary will brief you on the figures, including in the last few weeks, the strides we've made. के लिए वित्त मंत्री जी ने भी अलॉटमेंट की थी, बहुत ऐसी स्कीम्स है। और यहाँ पे प्यूनिटिव एक्शन की बात है, मैं आपको श्योर करता हूँ जो भी एरेंट एंटिटीज हैं, चाहे वो बिल्डर हो या कोई और हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होती है और तकड़ी की जाएगी। तैयार नहीं है तो रेरा एक कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्ट्रैक्टर लगा के और कुछ पैसा डेवलपर से, कुछ होमगार्ड से लेकर उनको कंप्लीट कराए। ये दोनों रिकमेंडेशन आपने कही बात बिल्कुल सही। देखिए ऐसा है, कंट्रोवर्सी कहाँ हो रही, क्या हो रही है, मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो इस मंत्रालय के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अगर हम उसको बाकी चीजों में हम अलग से बात कर सकते हैं, टाइम इज वेरी लिमिटेड। जहाँ तक वक्फ और प्रॉपर्टीज की बात है, मैं मनोज जी को रिक्वेस्ट करूंगा टू गिव यू अ स्टेटस रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज में उनको नोटिस दिया गया है कि डिटेल्स वगैरह के लिए सारी इंफॉर्मेशन, तो हमारे मिनिस्ट्री का जो भारत सरकार का पोजीशन है कि ये प्रॉपर्टीज भारत सरकार को बिलोंग करती हैं, जो भी मैनेज कर रहा है प्रॉपर्टीज को मैनेज कर रहे हैं, पर प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वहाँ पे जो भी नोटिस दिया गया है सारी जानकारी वगैरह देने के लिए दिया गया है। एट प्रेजेंट द स्कोप इज लिमिटेड फॉर दैट। पे काम हो रहा है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी लार्जली बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल अथॉरिटीज वेयर अ स्टेशन इज। अब जहां पे भी है, कुछ ऐसे शहर हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी इज गुड, पर हम अपनी तरफ से अर्बन ट्रांसपोर्ट को कैसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं उसके बारे में बताता हूं कि 2 पहले स्कीम्स थी जो देश के 9 बड़े शहर हैं, फेम 1 एंड फेम 2 में, उसका अलग मॉडल था। अभी जो हम एक स्कीम लाए हैं 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस को इंट्रोड्यूस करने की, उसमें मैं सेक्रेटरी सचिव जी को बोलूंगा आप जरा उसके डिटेल बता दें। इसकी गाइडलाइंस 2 दिन पहले इशू की है। सभी स्टेट से जो शहर है 3 लाख से ऊपर की आबादी के, 3 लाख से 40 लाख तक की आबादी के 169 सिटीज इसमें एलिजिबल हैं। चैलेंज मेथड से उनकी एप्लीकेशंस इनवाइट करनी है, हमने सब चीज़ को लिख दिया है कि 30 सितंबर तक उनके प्रपोजल्स आ जाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी वगैरह के साथ में। और उसके बाद तुरंत बाद CESL उसका ऑल इंडिया टेंडर करके सारी बसेस को प्रोक्योर करके
हम लोग 20 से 24 रुपया पर किलोमीटर स्टेट गवर्नमेंट जो बस के ऑपरेशंस के लिए वायबल गैप फंडिंग लेंगे और बाकी ऑपरेटर्स आके OEMs के साथ उन बस सर्विसेज को चलाएंगे। ये AC बसेस होंगी। इन बसेस में प्रॉपर IT मैनेजमेंट सिस्टम GPS के साथ ऑपरेट होगी। जैसे मेट्रो में ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम की मशीन होती है, वो मशीन इन बसेस में होगी। तो जो मेट्रो का आपको एक्सपीरियंस है वैसी बस फॉर्म में लाने का ये प्रधानमंत्री जी का जो डिसीजन है, ये बसें हम 5-6 महीने में हम इनका ग्राउंड पे लाने का शुरू कर देंगे। Manoj ji is very careful in choosing his words. आपने कहा कि 10,000 बसेस का है, कितने महीने में शुरू होंगी एक्सेट्रा, but I want to add to that this is only the beginning. These 10,000. We have to make this model work, and I'm confident that the model which we have worked out, which involves a service provider, it involves the state government, and it involves the central government. तो जो रेवड़ियों बांटने की गेम में है वो तो नहीं कर पाएंगे, पर जो करेंगे, बिकॉज द कंज्यूमर वांट्स गुड अर्बन ट्रांसपोर्ट। और ये जो अगर मेट्रो की राइडरशिप इज गोइंग कहाँ 65 लाख का मेरा हाईएस्ट फिगर था, मुझे पूरा यकीन है 70 लाख तक पहुंच गया होगा। इज बिकॉज दिस इज व्हाट द कम्यूटर वांट्स। व्हेन यू गेट आउट ऑफ होम इन द मॉर्निंग, अगर आपके पास लास्ट माइल कनेक्टिविटी है और मेट्रो स्टेशन तक पहुंच सकते हैं, व्हाई वुड यू वांट टू टेक आउट योर ओन कार एंड burn either fossil fuel or electric vehicle also, because the grid is not fully green yet. It will become green the rate at which we are going. So this is just the beginning. I am very confident, just as the metro urban transport segment has worked very well, these e-buses will also do very well, and for that the infrastructure and the guidelines have now been issued. I'm glad Rajiv is showing me rules notification. 35 states and UTs have done. Projects registered 1,10,063. Regulatory authorities constituted 32 states and UTs. Agents registered 78,048. Appellate tribunals formed in 28 states and UTs. Cases disposed 1,11,362. This answers your question. So I'm glad this e-book is a reservoir of information. And I thought it necessary to have this press conference with this, so that you can refer to it. And if you have any problems or if you have any questions on individual states, I've got my team, they'll happily supply that. And we can have another meeting which is state specific. So thank you. Central government gives a little subsidy, typically 1.5 lakhs per beneficiary. And then the beneficiary, meets the remaining expenditure himself or herself. All titles in the name of the lady of the house. PLC is beneficiary-led construction, where you have a traditional home that you need to get it done up. We will give you some assistance in that. Some state governments also give. The third was that CLSS, Infra Credit Linked Subsidy Scheme. This was an interest subvention. And the fourth is what you are asking, in situ slum rehabilitation. I think the ISSR projects are. Do you have the precise details here? The details of the ISSR. Yes, sir. 4.5 lakh houses have been set. No, that I know, but kahan has schemes, etc. Sir, all All over. I'm aware of Bangalore one scheme. We have one scheme going on in Delhi. These are in situ slum rehabilitation. Other places, they are at a stage of tendering. Ye badega. Jahan jugi wahi makan is more than ISSR also. So I think some of these, in some ways they were teething difficulties because, the kind of returns that were being offered, builders or people were not coming forward. We're tweaking that whole system, and we'll give you the details on this.